Hello, everyone. My name is Pankaj Godwani, and I welcome you all to this session on how we can use AI to improve reading for CAT and other management entrance exams. Right. So basically, before I take you ahead in this session, एक छोटा सा disclaimer है, AI is not a replacement tool, and it is not something जो आपको replace ही कर देगा. But yes, you can obviously use it, for your preparation. And exam तो फिर भी आप ही को ही जाके लिखना है. ओनली इफ देयर वर अ वर्ल्ड जहाँ पे एआई जो है वो ह्यूमंस को ऐसे रिप्लेस करके एग्जाम भी लिखने जा सकता अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं. सो कैसे हम लोग एआई को यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड जो प्रॉब्लम्स हमें रीडिंग से रिलेटेड आ रही हैं, जैसे when we go ahead in the passage we forget what we read previously. Sometimes vocabulary becomes an issue, or even if we are able to understand the passage, we still end up marking wrong options for the questions on those passages. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग एआई टूल को कैसे यूज कर सकते हैं. The entire session is about that, and AI can help you fix your reading. So सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछे कि how many times you reread the lines, or how many times you start from the beginning of the paragraph कि भाई हमने ये read किया, okay, now let's go ahead. Second paragraph आपने read करना start किया. The moment you complete 2 or 3 lines, you forget कि यार पीछे क्या पढ़ा था. Then you start from the first line of the paragraph, at which you had this feeling. फिर आप उसको रीड करते हो, फिर आगे वाले पैराग्राफ में वापस वही प्रॉब्लम आती है. सो हाउ मेनी टाइम्स डज इट हैपन. सो एक स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने बच्चों से पूछा एंड एक क्वेश्चनर उनको दिया था, एंड उसके बेसिस पे ये पता चला एवरेज कैट एस्पिरेंट वी रीड्स द सेम पैसेज 3 times. आई मीन ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप इसमें इंक्लूडेड हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज कैट एस्पिरेंट, राइट. सो सभी लोगों का एक स्कोर निकाला गया, एंड ऐसा लगा कि यार average CAT aspirants, reread passages 3 times. And especially problem तब बढ़ जाती है जब वो inference के questions होते हैं. ठीक है. So problem जो है, problem speed का नहीं है. Make sure problem जो है वो speed का नहीं है. Problem जो है, it's what you're doing while you read. ठीक है. कि आप क्या कर रहे हैं. And there are some things that you can do to improve this situation. First, हम ये देखते हैं कि कैट आरसी टेस्ट क्या करता है. सो कैट आरसी ये नहीं पूछता कि आपको पैसेज समझ में आया या नहीं आया. कैट आरसी क्या पूछता है कि यार ऑथर का अजम्पशन क्या है. कैट आरसी ये नहीं पूछता कि आपको सारी लाइंस जो है वो याद है या नहीं है. कैट आरसी ये पूछता है कैन यू टेल समथिंग द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद. कैट आरसी आपसे ये नहीं पूछता कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता है क्या. कैट आरसी ये पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया क्या. बिकॉज मेथड ऑफ रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कैट आरसीज में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. सो देयर आर सम थिंग्स दैट कैट आरसीज एक्चुअली टेस्ट. वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख दी है. नाउ एंटर्स एआई. Remember, it's not a shortcut. It's your partner. You can treat it as your partner. A guidance tool जो throughout your preparation आपकी help करता रहेगा, provided you use it correctly. पहले हम लोग देखते हैं what you usually do. So you read the passage, you attempt the questions, check the answer, move to the next one. और ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी मेंटोर के आप किसी मेंटोर के साथ अगर डिस्कस करते हो तो आप क्वेश्चन पूछते हो कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं. मतलब बहुत ही जेनेरिक सा सवाल होता है कि सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया. नाउ व्हाट डज अ मेंटोर डू. मेंटोर आपको राइट आंसर बता देता है, बोलता है कि देखो देखो इस लाइन से ये आंसर आ गया, एंड देन यू आर ऑन योर वे. बट पूछना क्या चाहिए था कि सर ये पैसेज मैंने समझा, दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग, एंड ये सोच के मैंने ये पर्टिकुलर ऑप्शन बी मार्क किया. अब बताओ कि मेरे सोचने में कहां पे गलती हो गई. नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चन टाइप्स. आई मीन जो दो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिए, एक आप बोल रहे हो कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, द मेंटर टेल्स यू द लाइंस from which that particular option is derived. He has completed his job. You're on your way. The second, forces the mentor to, dive deeper into your thought process and आपको एक curated जवाब दे. क्योंकि ये वाला जवाब हर एक के लिए शायद लागू नहीं होगा. Because it may be different for you, and for some other people, the answer may be completely different, right? Because it is unlikely that you share the same thought process as the other person has.
सो यहाँ पे एआई से हमें यही सारी चीजें पूछनी है. सो वी रीड द पैसेज, वी गेट क्विज्ड बिफोर सीइंग आंसर, understand exactly where our reasoning went wrong and build a pattern of our own mistakes. ठीक है, जो जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं उसका पैटर्न बनाते जाएं. नाउ ये जो पर्टिकुलर चीज है, डेली अगर आप 10-10 मिनट भी करते हो तो ओवर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपके पास एक पूरा एरर लॉग जो है प्रिपेयर हो जाएगा. एंड आई कैन गारंटी दुनिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये आपके लिए नहीं कर सकता जो एआई आपके लिए कर सकता है. ठीक है, एनीवे हम लोग आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है. सो सबसे पहले तो अपने आप को पहले क्लासिफाई करो, आर यू अ वीक रीडर और अ स्पीड रीडर और अ ओवर थिंकर, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग ही आप चैट जीपीटी या क्लॉड या फिर परप्लेक्सिटी जो भी आप यूज करते हो. आई मीन इट डज नॉट मैटर कि आप क्लॉड यूज कर रहे हो या चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, बट आप जो भी यूज करते हो पहले ये क्लासिफाई करो क्योंकि प्रॉम्प्ट उसी के अकॉर्डिंग है. इफ यू आर अ वीक रीडर, सो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट रहेगा, एक्सप्लेन दिस पैसेज इन सिंपल वर्ड्स पॉइंट वाइज, देन टेल मी व्हाट्स द बेयर मिनिमम आई नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज. नाउ हु इज अ वीक रीडर? आपको टॉपिक ही अनफेमिलियर लग रहा है, यू हैव नॉट रेड दिस टॉपिक, सो यू वुड ऑब्वियसली नीड सम बेयर मिनिमम, ताकि आगे भी अगर कभी ऐसा कोई टॉपिक आता है तो एटलीस्ट उतना तो पढ़ा हुआ हो, सो दैट यू फील फेमिलियरिटी विद द टॉपिक. दैट्स द प्रॉम्प्ट फॉर यू. इफ यू आर अ स्पीड रीडर, यू फिनिश फास्ट बट गेट इन्फरेंस क्वेश्चंस रॉन्ग. ठीक है, पैसेज आपने जल्दी से पढ़ लिया बट फिर भी क्वेश्चंस जो है गलत हो रहे हैं. सो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट रहेगा, आई read the passage in 120 seconds. What did I most likely miss? What trap answers would catch someone who skimmed? आप इसके साथ अपने कुछ additional responses भी वहां पे दे सकते हो. भाई, this is what I thought and that's how I marked the answer. Tell me where I went wrong. Now, exactly the kind of questions you were supposed to ask your mentor, but अब AI है and mentor is not available every now and then, तो फिर this can be your help, right? And the overthinker. So overthinker कौन होता है? Read too much into every line and बहुत सारे interpretations होता है, and then you finally get confused and end up marking the wrong option. So कुछ ऐसा. I'm overcomplicating this. Give me one line core argument and tell me why other interpretations I'm tempted by are wrong. So अब वो क्या करेगा? वो हर एक ऑप्शन के लिए आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देगा, एंड आप देखो कि आपने जो सोचा था उस ऑप्शन के लिए और जो आंसर आपको मिला उस ऑप्शन के लिए, उसमें कहां पे डिफरेंस आ रहा है, एंड यू हैव टू अलाइन दैट थिंकिंग अकॉर्डिंगली, राइट? एंड आज के टाइम पे दिस कैन बी डन प्रीटी इजीली. यू डोंट नीड टू बाय अ प्रीमियम वर्जन ऑफ एनी एआई टूल. डेली 10 मिनट के लिए फ्री वर्जन भी आपकी हेल्प कर सकता है. सो जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है उन एक्सप्लेनेशन को ढंग से पढ़ो कि भाई कहां पे आपने गलत सोचा. So these three, if you classify yourself among, if you classify yourself among one of these three, तो फिर prompts उस according आपको देने हैं. तो मैंने ये एक पैसेज रखा एंड मैंने वही वाले prompts जो हैं वो चैट जीपीटी को दिए थे. So मैंने ये एक पैसेज रखा. अब अगर मुझे आज अगर मैं अपनी पैसेज के ऊपर थिंकिंग जो है बिल्ड कर रहा हूं तो मेरे को पैसेज के कुछ की आइडियाज जो है फॉर्म करने होंगे. ये पैसेज क्या बोल रहा है? The persistence of poverty in resource-rich nations has long confounded development economists. Development economists को confuse किया हुआ है. Conventional wisdom says that if you have more natural resources or natural wealth, obviously governments can put that wealth into action and government can invest in infrastructure, education, public health. Yet, empirical record tells a starkly different story. जहां पे जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, डेवलपमेंट उसी कंट्री का सबसे स्लो हुआ. ठीक है, देन द काउंटरपार्ट्स. दिस phenomenon is termed resource curse, operates through two interlocking mechanisms. First, it says commodity exports, they increase, and then governments, pay attention to the needs of exports, not to the needs of, people. So, second, resource revenues insulate governments from need of tax citizens. So if government were dependent on citizens for tax, government would pay attention to citizens. But now the government is not dependent on citizens for tax. It is dependent on exports. So government would pay attention to the needs of those people who are exporting or who are importing from this country, which is resource rich. So taxation creates a political relationship. Citizens who pay taxes demand representation and transparency in return. Where governments fund themselves entirely,
from resource rents, this dynamic collapses. So basically, there's no relationship that exists between a government and a taxpayer. So government would not even pay attention to the demands of taxpayer, and that is why the development of the country slows because government does not invest in infrastructure, education, public health. Rulers become answerable to commodity markets and foreign investors, not to domestic constituents. Critics argue that casual arrow may be reversed. So this, casual arrow may be reversed, and weak institutions may cause both poor resource management and slow growth. So critics, point towards a different direction. They say weak institutions, cause this. So rather than resource abundance causing institutional weakness, what distinguished successful resource-rich nations, scholars contend, was prior existence of capable, relatively honest state institutions. So until this point, the author argued that it was completely dependent. I mean, the development completely dependent on what kind of revenue model government has. If government is dependent on taxpayers or the government is export oriented. Then later, the author introduces the argument by critics, and critics point to a different direction. Critics say it is the institutions because there are some countries which are resource rich, yet they are developed. Why? Because institutions are honest. So the debate thus pivots on sequencing. डिबेट जो है वो ये बोल रही है कि it is the institutions that decide the development of the country, not how the government is oriented or how the government is dependent for revenue, right? So last में author यही बोल रहा है, the curse, if exists at all, is not written in the geology but in the political arrangements that preceded extraction, right? So मतलब institutions के ऊपर. So मैंने इसके कुछ key ideas लिखे. Every 3 to 4 lines आप इस वीडियो को पॉज करिएगा एंड ये की आइडियाज देखिएगा. एग्जैक्टली मैंने सिंपल टर्म्स में उन्हें लिख दिया यहाँ पे. सो एवरी 3 to 4 लाइंस wherever I find a full stop, मैंने उसको पढ़ा समझा अपने वर्ड्स में एक लिख दिया. रिसोर्स वेल्थ does not automatically produce development. The empirical record contradicts the intuitive assumption, right? Next part यही बोल रहा था, the curse works via 2 channels: exchange rate damage to other sectors and fiscal insulation that removes accountability pressure from the government. So मैंने ये सारे key ideas बनाए और उन key ideas को अपने words में लिखा. So that is the one way of starting the reading, right? So you can do this exercise and then give your response. Give this response sheet to any AI tool that you use. और आपको वो बता देगा कि आपके समझने में कहीं पे गलती हुई है या नहीं. If not, you can pat yourself. If yes, तो कहाँ पे गलती हुई है नोट कर लो उसको. But you need to do this continuously for next 30 to 35 days in order to create that error log which is substantial and जो आपको feedback दे सके, right? उसके बाद there's this prompt: act as a CAD examiner, read the passage below and ask me 3 inference questions. One on central idea, one on tone, one on what would author likely agree with. ठीक है? So after that कुछ ऐसे questions जो हैं आपके सामने आते हैं. अब मैं इनके answers जो हैं वो आपको at the end of the session बताऊंगा. So एक बार pause करके अपने आप answers mark कीजिएगा, right? मैं answers आपको at the end of the session बताऊंगा. So यहाँ पे जो भी आप आंसर मार्क कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का सही होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों के आंसर्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं, यू नीड नॉट वरी. इनफैक्ट आप अपनी रीजनिंग जो है वो जो भी एआई टूल आप यूज कर रहे हैं उसे अपनी रीजनिंग दीजिए एंड आस्क कि मेरे इंटरप्रिटेशन में दैट्स व्हाट आई थॉट एंड मेरे इंटरप्रिटेशन में कहाँ पे गलती हुई. You'll get a real time feedback कि आपके interpretation में ये गलती हुई. Remember, it is only a tool that helps you improve. It is not a replacement. ये आपको replace नहीं कर सकता. So you need to read it wisely and you need to use it regularly in order to create that error log. And this is something कोई भी institute आपके लिए नहीं कर सकता. No matter कुछ भी claim किया जाए नहीं हो सकता. So ये जो आपकी हेल्प कर सकता है कैट रीडिंग के लिए, दैट्स फिनोमिनल. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने. द ऑथर्स टोन.
can best be described as? And the third question, with which of the following statements would with which of the following statements would the author most likely agree with? सो आपने ये तीन क्वेश्चन देखे, आपको ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पॉज करके आपने अगर सॉल्व नहीं किया तो अभी कर लीजिए. अब मैं आपको बताता हूँ इनके करेक्ट आंसर्स क्या है. सो जो ये तीन क्वेश्चन है उनके करेक्ट आंसर है सी, बी एंड सी. क्या आपने यही आंसर्स मार्क किए? इफ यस, कंग्रेचुलेशन. इफ नॉट, आप अपनी रीजनिंग जो आपने समझा वो रीजनिंग एक बार चैट जीपीटी के साथ शेयर करिए या फिर क्लॉड के साथ शेयर करिए और एनी एआई टूल दैट यू आर यूजिंग उसके साथ शेयर करिए एंड लुक एट द रिस्पॉन्स. सो कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट 30 days एंड आपको एक पूरा आपका एरर लॉग देखने को मिलेगा विच इज गोइंग टू बूस्ट योर रीडिंग, राइट? So let's be honest about some things. AI can't simulate exam pressure. वो exam pressure अभी भी रहेगा. This only helps improve your reading. AI can be confidently wrong. मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो 100% राइट होंगे या जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो हमेशा राइट होगा. बिकॉज ऑब्वियसली AI कैन बी रॉन्ग एंड वो बहुत अथॉरिटी के साथ ये प्रेजेंट करेगा कि ऐसा होना चाहिए बट वो गलत भी हो सकता है. बट देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो ये एक डिस्क्लेमर था आप लोगों के लिए. AI never gets impatient. वो आपकी हेल्प जरूर करता रहेगा. सो सेशन के बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था दैट AI is going to help you throughout your prep time. So better start using it. And one habit, 10 minutes a day, done for 30-35 days in a row. Trust me, you're going to get a good error log. And आपको अपने बारे में रियल टाइम में फीडबैक पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे मेहनत करने की जरूरत है. Right. So I hope you enjoyed this session, and hope you find it, useful. If yes, please hit the like button and subscribe to our channel for more such videos. मेरी तरफ से आज इतना ही. Thank you all. You all have a wonderful day ahead.